if people can go through it. So दो trades लिए तो trade objective what I'm doing right now is instead of thinking in terms of percentage what my trade objective I'm thinking in terms of R the return RR okay so for example if my I'm actually अभी मेरे for example मेरा जो old NSDL का जो trade है उसमें मैंने मेरा objective ये है कि at least I need to make a 4R on this particular trade given my stop loss is around 2.5 to 3%. This is just a rough calculation. And then once I keep on doing my trades, then एक idea आ जाएगा कि should I increase my R और कहाँ से मैं increase कर सकता हूँ. Why is your objective based on an outcome which you can't control? Valid point because this is based on past data what I have from the journal, how much I'm making and what was my stop. उसके हिसाब से फिर मैंने अब थोड़ा improve कर रहा हूँ उसमें. That was my thinking when I started my objectives. Okay, so by objective, I ideally mean, right, on two things, okay? Abhi suppose trade execution le lete Vivek, okay? What kind of a setup is it? Does it require a quick kind of a selling, partial kind of a selling, or is it supposed to be a magnitude kind of a trade? Okay? अगर suppose से IPO है या earnings breakout है, which is a typical like a longer term or a positional trade, okay? I may play it positionally. But say there are many times when I'm not doing well in my portfolio, I would just want to churn faster to get my mental confidence back. Okay, so there's a setup play or a pre-objective that we have, and then there's the current situational awareness or my mental state that I want to manage. Okay. So suppose if you are of the situational awareness, ki those every day you are posting that it is supposed not too great, but you're still finding out opportunities within that. Okay. If you take a very quick trade, okay, you may just have a pre-objective कि भाई I'm working for a quick hour, okay, फिर वो pre-objective में कहाँ पे execution define होगा कि suppose जैसे दीक्षित करता है, okay, you take a quick 2 hour or 3 hour, okay, you get your stop loss to risk free, okay, then whatever comes, okay, you have got your capital protected. So two major objectives क्या होगा in your magnitude, you are going for bigger moves. So you are expecting shakeouts, portfolio volatility, okay? But that is a passive trade on a day-to-day execution level, okay? On a velocity trade, your bigger risk here is death by 1,000 cuts, okay? So you are optimizing for your win percentage, one, okay? And second, you are optimizing for frequency. In a velocity trade, if you are stuck with no result, it's a crime. Correct. क्योंकि तुमको क्या you continuously need to keep the scoreboard rotating. So whenever we are keeping a pre-objective, right? It is ideally on what? It is how we are executing. Okay. वो execution में what is the outcome that we are trying to derive? And outcome always here will be more from the risk or the sacrifice perspective. क्योंकि you can't really determine on the upside many times. अभी तुमने 4 hour ले लिया, okay? Objective what you have said is कि NSDL 12% move होना चाहिए. How we can't set that. That's not in control at all, no? Right. Makes sense. So objective is something which we can control and sync your execution in line with that. Okay. So my idea was कि like for example अभी जैसे ग्रुप में सेलिंग का एक बड़ा इशू था मेरा for example तो मैंने फिर इसलिए मैंने 4R किया कि एक ये कुछ भी ये रखो कि मैंने एक डिफाइन करो अपना सेल रूल कि कहाँ पे मैं इसलिए मैंने 4R रखा था बट आई गेट योर पॉइंट विवेक ये जो इस बार सबसे पहले हेलो एवरीवन आज मैं थोड़ा लेट रहा राइट सो एंड थैंक यू अनुराग ही हैंडल्ड इन माय बिहाफ राइट सो वन थिंग विवेक यहाँ मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो हम लोग इस जो संडे को सेशन होगा ना विल डिस्कस अबाउट डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ट्रेड राइट वो चीज यहाँ पे हम लोग एड्रेस करेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लेवल पे क्योंकि अब आगे जाने के लिए कोर्स में राइट क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग हम लोगों का इस सैटरडे को कंप्लीट हो रहा है वी विल सम अप एवरीथिंग दैट वी लर्न टिल नाउ राइट तो आगे जाने के लिए वी नीड टू हैव एन ऑब्जेक्टिव इन माइंड राइट उसके बाद हम लोग आगे बिल्ड कर पाएंगे दैट इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 4R आपने निकाला अपने जर्नल से ये कौन सा एग्जैक्ट डेटा था जिससे आपने निकाला दैट इज समथिंग आई वांट सो मेरे जर्नल में जितने भी लाइक पास्ट ट्रेड्स है जो 45 ट्रेड्स जो थे उसमें मेरा एवरेज आर वाज अराउंड 2.3 तो मैंने बस उस बेसिस पे मैंने बस उसको बढ़ा के 4R कर दिया कि भाई इतना मैं थोड़ा उसमें इंप्रूव करके मैं अपना आर बढ़ाऊं देखिए विवेक सबसे पहले एवरेज जो चीज है ना ये बहुत ही स्टूपिड चीज है मतलब मैं ये बोलूंगा कि इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग टू सी
क्यों? देखिए एवरेज क्या होता है, मान लीजिए आप कहिए कि वो एक प्लेयर था ना, क्या नाम था उसका, जिसने 300 रन एक मैच में बनाए थे और अगले 10 इनिंग्स में फेल हो था, राइट, जो अभी तुरंत वापस आया था, करुण, राइट। अब 300 रन आप एक इनिंग्स में बना रहे हैं और रेस्ट 10 में फेल हो रहे हैं, तो भी आपको 30 का एवरेज तो आ ही रहा है, राइट। आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बना रहे हैं तो भी आपको एवरेज आ रहा है, ठीक है। यदि आप ये समझिए कि हर नॉन इम्पोर्टेंट मैच में या फ्लैट पिच पे रन बना रहे हैं तो भी आपका एवरेज आ रहा है, ठीक है। एवरेज जो है वो आपको आएगा 56 57, एनीथिंग आ सकता है, ठीक है। उससे ये डिफाइन नहीं हुआ और आप युवराज सिंह है, बहुत कठिन परिस्थिति में भी रन बना रहे, नंबर 6 पे भी बना रहे, तो भी आपका एवरेज डाउन है, भले आपका कंट्रीब्यूशन मैच विनिंग में जा, राइट। तो सबसे पहले तो एवरेज जो है वो एक सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही रद्दी तरीका है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि आपका जो दो एवरेज आया ना, कोई ट्रेड जो विनर हुआ, आपको अब मैं बताता हूँ ये दो एवरेज का जो कहानी है, ठीक है। कोई आपने ब्रेक इवन पे कट किया, ठीक है, वो एवरेज घटा रहा है। कोई आपका 10 आर जा रहा है, वो एवरेज बढ़ा रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप 10 आर वाले को 4 आर पे कट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आप लॉस तो आप ले ही रहे हैं ब्रेक इवन पे, है ना, वो तो आपका कंटिन्यूड है। लेकिन जो 10 आर जा रहा है उसको आप एवरेज पे कट कर, तो आप विनर को लिमिट करेंगे, एग्जैक्ट मिस्टेक है जो नहीं करनी की, समझ रहे हैं? इसलिए एवरेज जो है ना, एवरेज कभी विदाउट डेटा, एवरेज से गंदा स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं बना होगा मेरे हिसाब से, राइट। वो सबसे खराब चीज है देखने के लिए। तो उसकी जगह एमएफई के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन तय कीजिए। यदि आपको 4 आर चुनना भी है ना, एमएफई के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन तय कीजिए, कितने स्टॉक है जो 10 आर गए, कितने स्टॉक है जो 6 आर गए, कितने स्टॉक है 5 आर गए। यदि मैं 10 आर के लिए टारगेट करता हूं तो मेरा विन रेट कितना घटेगा, इन दैट केस जितना रियलिस्टिक सिनेरियो बना सके। देखिए क्या होता है ना, आप जब एक, मतलब आप ये समझिए कि आप एक मॉडल क्रिएट करें, ठीक है। आप जब एक मॉडल क्रिएट करें किसी चीज का, तो आपको एक रियलिस्टिक सिनेरियो बनाना होगा। रियलिस्टिक सिनेरियो के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। सबसे पहले बेल कर्व के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विनर्स के, ठीक है। फिर आप अपने जर्नल में सिनेरियो एनालिसिस कीजिए। आप 10 आर के लिए गए और आप 6 आर पे स्टॉप आउट हो गए, मान लीजिए, ठीक है। तो आपके पास गेन क्या आता है, जितने जितने उसमें पहलू ऐड करेंगे ना, जितने डायमेंशंस रियलिस्टिक एनालिसिस की तरफ बढ़ते हुए आप ऐड करेंगे ना, उतना ज्यादा, यदि आप मॉडल यूज कर भी रहे हैं, हालांकि मॉडल में बहुत अच्छा कुछ कमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको एक डायरेक्शन, ठीक है। आप जितना क्लोज टू द रियलिटी जाके उसको प्लान कर सकते, है ना। अपनी ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से मैं 10 आर टारगेट कर रहा था, 7 आर पे आएगा तो मैं बाहर निकल, तो आपने जर्नल में लिखा कि 10 आर नहीं किया, 9 आर जाके प्राइस पुल बैक कर गई और मैं 6 आर पे आउट हो गया, तो मुझे कितना रिटर्न आप सारे का सिनेरियो बना के स्टडी कीजिए, ठीक है। जब वैसे स्टडी करेंगे ना, ये एक बहुत डीप कंसेप्ट है, क्योंकि ये एक आम आदमी को जनरली नहीं समझ में आएगा। लेकिन यदि आप वो करते हैं, यदि आपको मैथमेटिकल मॉडल से सेटिस्फैक्शन होती है, मैंने भी जब मैं वेलोसिटी कर रहा था ना, तो मुझे भी सेम प्रॉब्लम थी और मैंने यही काम किया था वहां पे, कि मैंने एक मतलब एमएफई का एनालिसिस किया था सारे ट्रेड में, कि 10, यदि मेरा 10 पीरियड मूविंग एवरेज ब्रेक होता है उससे पहले मेरा स्टॉक कितना ऊपर गया, मतलब एक एग्जिट स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दी कि ये मेरा अल्टीमेट एग्जिट है, उसके ऊपर स्टॉक कितनी दूर तक जा रहा है, तो इनसाइट कैसा मिलेगा। हालांकि एमएफई बहुत कमाल का कंसेप्ट नहीं है, उसके अपने फ्लॉज, राइट। एमए कंपैरेटिवली बहुत अच्छा स्टार्ट है, लेकिन एमएफई में बहुत फ्लॉज है। लेकिन फिर भी आपको जो इनसाइट प्रदीप बॉन्ड दे देते ना, 8 से 40%, 3 से 5, ये इनसाइट कहाँ से? ज्यादातर ट्रेड 8 से 40%, अब 8 और 40 में बहुत अंतर है, क्योंकि हर स्टॉक में अंतर है। लेकिन एक बस्ट, जो मोमेंटम बस्ट का टेंडेंसी है, वो क्या, वो 4% ब्रेकआउट नहीं, वो एंटिसिपेशन से 4% ब्रेकआउट देखना भी नहीं, वो डॉलर ब्रेकआउट भी नहीं, वो एलटीवी भी नहीं, और जितने तरह का उन्होंने अम्ब्रेला बना रखा है कुछ। मोमेंटम बस्ट की सिंपल टेंडेंसी है कि वो 3 से 5 दिन में 8 से 40% स्टॉक जाता है, राइट। आप उसको जैसे एक्सप्लॉइट कर, आप उसको कप एंड हैंडल के हैंडल से एक्सप्लॉइट कर लीजिए, 3W WIB 3IB 3WTC से एक्सप्लॉइट कर लीजिए, राइट, जैसे भी कर, है ना। एक टेंडेंसी ये हो गई कि 8 से 40% जाए 3 से 5 दिन में। उसका दूसरा पार्ट ये है कि यदि एक स्टॉक 2 महीने में या 1 महीने में 30% ऊपर जाना, तो वो 15% एक बार में जाएगा, फिर वो पुल बैक करेगा या कंसोलिडेट करेगा और फिर 15% दूसरे बस्ट जाएगा। मतलब स्टॉक मूव्स इन मोमेंटम बस्ट एंड मोमेंटम बस्ट लास्ट फॉर 3 to 5 days इन 8 to 40%।
ठीक है, ये आपका ओवरऑल टेंडेंसी। ठीक है, तो ये इंसाइट कहाँ से आती है? ये इंसाइट जब आप इस तरह का एनालिसिस करते हैं ना, आर के बजाय परसेंटेज में कीजिए। मान लीजिए मैंने परसेंटेज काट दिया आपका नीचे, ठीक है, तो आपका तो आर बढ़ गया, मतलब आर का आपका डिनोमिनेटर घट गया ना, तो आर बढ़ जाएगा इन दैट केस। इसलिए क्या होता है ना कि जब आप इसको रियलिस्टिक तरीके से देखेंगे, परसेंटेज में देखिए, है ना, आउटलायर कोई बहुत बड़ा है तो आउटलायर के पीछे भागना नहीं, क्योंकि कई बार किसी चीज को आप मोमेंटम बेस्ड के तौर पे बाय कर रहे हैं ना, वो हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा थीमेटिक मूव, राइट, तो आउटलायर से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं होना है ना। तो इसके जरिए जब आप रियलिस्टिक एनालिसिस करेंगे तो आप रियलिटी, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। I'll add two things. एक minute, Chirag. I'll share my screen, Vivek, just a Yeah. second. Add on to the pre-objective part of it. Screen दिख रहा है ना? आ रहा है, आ गया। एक मिनट, I'll show you a trade. Let's take, say, अच्छा, let's take something like this, विमता का, ठीक है? I got this somewhere last week, ठीक है? Now my objective in this was for a quick trade. I was not looking for a magnitude trade here, ठीक है? तो यहाँ पे एक स्लाइड मेरे को फ्लैग टाइप दिखा था पैटर्न, आई मिस द एंट्री हियर, ओके, सो आई पुट इट हियर, यहाँ पे गया, आई पार्शियली सोल्ड इट एज ऑन डिस्प्ले, ओके, नेक्स्ट डे आई वाज काइंड ऑफ स्टॉप्ड आउट ऑन 1 hour or whatever, okay, it came down, ठीक है, I missed this entry and it went up, okay, now ideally would you call this a failed trade? No, right? So even though it went up, my this trade in isolation was in sync with what I had thought of before. करेक्ट। ऑन द हाइंडसाइट आई कैन, जब मैं पोस्ट एनालिसिस करूंगा कि भाई अगर मेरे को ये दिख रहा था 20 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, व्हाई कुड आई नॉट हैव ट्रैक्ड इट हियर प्रोबेबली, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट उस समय दिया नहीं था, छूट गया था, कहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन एरर था, दैट इज अ पोस्ट एनालिसिस दैट आई नीड टू सी, ओके, so my biggest flaw in my post analysis, I miss a lot of stocks. That is my flaw. Okay. So, but here, यहाँ पे क्या था ना, this trade in isolation was okay. Now, if I keep in a 4 hour objective here, right, that is not something which I can control. I'll show you through a journal. एक मिनट, जर्नल ही कर रहे हैं ना, let's take this. Okay. जो तुम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे थे ना विवेक, this is something 4 years back. This was FY21. Okay. Now, this is my P&L distribution curve for that. Okay. In this case, suppose I took in 263 trades. I'll show you the actual ratios because I was trading very quick that year. FY21, this is actually 21-22. So March 1st April 21 to March 22. This is what it is. Okay. I could not trade in March that year. Okay. और मार्च उस समय शायद ये कुछ वॉर भी स्टार्ट हो गया था. I was traveling, year end था. It did not work out. Year started well. ठीक है. It was doing well for me. October, I remember a slight correction came. I was still very bullish and I had a bigger drawdown. Okay. Now, you see यहाँ पे जो -10% है ना, this is not -10% on a base of 100. ठीक है, यहाँ पे क्यूमुलेट हो के, सपोज अगर मैं यहाँ पे क्यूमुलेट कर रहा हूँ ना, दिस इज 10% on 197. Got it. So this is actually -19, -20 down. Okay. उसके बाद and if you see here, even though the win percentage looks like 32, it is not 32. My win average is close to zero. That means I have had literally no winners. I have had only break evens or stop losses for that particular month. ठीक है? So you see this, मेरा जो loss average यहाँ पे से 1.5 के आसपास था ना, this drastically started going down because probably I was not selecting my stocks right, or I was playing magnitude based on my 2020 experience and I underperformed कि भाई चलने दे. So what was I actually playing? I was playing by P&L. I was not playing the trade. Correct? So your the pre-trade objective that you said कि this will be a quick trade, that was based on your past experience. So no, so how I'll tell you this, I'll tell you for the mental confidence part of it. Okay. Abhi, you see this win rate drastically coming up in the last 3-4 months. Okay. Jan, if you see, I had matlab, good enough trades, 20 odd trades. My win percentage is nearly 70. It sounds insane, right? Okay. But see these two ratios. It is nothing. Nothing, yeah. ठीक है, मतलब हार्डली 1.7 एंड हार्डली 0.96, मतलब मैं नीचे भी नहीं जाने दे रहा हूं.
मतलब लास्ट टाइम दीक्षित जो 0.5 बोला था उसके भी ऊपर है काइंड ऑफ। ओके, बट सी द डिफरेंस हियर, यू नो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, माय लॉस एवरेज इज वेरी ड्रास्टिकली डाउन। ओके, उस समय आई वॉज इन अ माइंडसेट कि भाई मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं, एंड दिस समहाउ हिट मी साइकोलॉजिकली। My idea of it was I am not now looking for the big six. I need my mental confidence back. That can also be Okay. a key Okay. objective. Okay, objective is not always playing your P&L. It is also at times playing yourself and the trade in sync. So what is the risk I was carrying at that part? I was carrying कि जैसे विमता जैसा stock था, which can have a 20-30 hour kind of a run. Okay, but I am willing to settle at 2 hour, shift off to the next stock and keep on shifting as fast as possible. So यहाँ पे अगर win loss days देखोगे ना, it is nothing. Okay, so I was just cutting it. जैसे दीक्षित कह रहा है ऊपर गया ना, नीचे स्क्वाट हो रहा है, I'm out. Okay, so this year I worked with a couple of traders. I don't know Karthik, I don't know if you know them. Okay, we changed their game completely. थोड़ा भी squat हो रहा है, right? Okay, because they many of them were so rigid rule traders. It was more important to get that mold out from the artificial rules that we end up creating. कि ये 4 आएगा तभी अच्छा trade है. It does not work that way. It is predominantly how you are churning your portfolio. It can either be a six or it can either be six singles. Both of the impact can happen on one day also, 2 days also, or over a month also. Okay, so I have a question. Though, when you were making these small wins to get back your confidence, for let's say for example, some of these stocks, जब ये let's say you sold it, फिर ये अगर let's say ऊपर चले गया, what were you then? What was your thinking? कि ये were you like ठीक है, you're still confident कि I'm यार no out. I So what is the sacrifice I did, Vivek? I sacrificed, okay, getting shaken up. अगर मैं ये इतना हाई विन रेट आ भी कैसे रहा है पता है, ठीक है, आई हैव केप्ट सपोज अ 1.5-2% stop loss, ठीक है, इट इमीडिएटली गोज अप बाय 1 or 2%। ओके, इतना टाइट स्पॉट कभी ना कभी उतना तो चला ही जाता है ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेड एक का तो ऊपर चला ही जाता है। ओके, if I completely immediately get it to stop 1 hour पे, for example, what are the two risks I'm taking out? Okay, one is थोड़ा भी नीचे आता है, I'm shaken out at cost. Okay, my win percentage increases, but the net impact on portfolio is zero. zero, yeah. Then it goes up again. Okay, and it shakes me out. I lose out on the big winner. That is my biggest sacrifice. Right. My pro in this is I know कि भाई 70% of the times I'm not going to lose. Okay. That allows me to keep on getting my frequency and my hesitation of punching in out. Okay. ओके, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बताऊं, देख ये पूरे साल का है। ओके, कितना ट्रेड्स था, 260 और ट्रेड्स। ओके, within 260, if I merge this, right, 47 plus 69 plus 72, this is what, roughly about 180 or 190 odd trades. Okay, 70% of the trades are just out. Okay, अगर मेरे को actually if I had nearly a double kind of a return, where is the chunk come in? It has come here, which is not very big returns, right? If you compare two kinds of people, right? You compare say a positional trader, okay, like a Koala Maggie kind. He will have a smaller win rate, but he will be concentrated here. Right. Okay, for me, I am just trying to concentrate here and increase these bar sizes. Okay. Okay, this is something I do, may not be suitable for everyone as a disclaimer, but बहुत बार time क्या आता है ना, when you are say very exhausted out of work, okay, you don't want to trade. There is a mental capacity or a load which you also take in trading a long stock. तो अगर suppose ये पकड़ू ना, नेटवेब लेते हैं, चल last time लिया ना नेटवेब। Now, when I'm seeing this, right, okay, this in itself is also a stress point. Whether to sell, how much to sell, when to sell. Okay. Right. Now, यहाँ पे any decision that I would take, right, is going to be partially wrong, partially right. I'm just going to be probably less wrong or less right in the hindsight. Correct. But is my pre-objective met that I want? अभी यहाँ पे क्या, अगर यहाँ से आता ना, ठीक है, यहाँ last time when we discussed, I think it was somewhere around here, I think. ये एक या दो बार आया था. Okay. Yes. It was very easy for me to get that 4 or 5 hour also. My win average आज ये साल जर्नल में क्या है, hardly about 3 hour. यहाँ तक तो already आ गया था. I was at around 10 to 12 hour. Very easy for me according to the Minervini book to cut this. But it would not have been in sync with my objective. Okay.
Okay, so abhi pehle, Chiraka, one of the biggest value additions in my trading has been this. Okay, he always used to advocate sell in weakness, and I used to keep on arguing with him कि नहीं भाई तू आधा बेच देना 4 hours पे एवरेज मेंटेन कर आगे चलते जा. But you know what starts happening is there are times when you have to time the stock because the stock character is such. Okay, and we are तो क्या होता है ना, we are playing the Perth pitch, Sri Lankan pitch, and the England pitch in the same way. If you keep that 4R as the uniform objective across all your stocks, you are not never going to play the stock at all. You are just playing your P&L. तो ये देख, ये जब एक्चुअली विन रेट आया, राइट, सी दिस वाज Q4, आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग. सी द डिस्ट्रीब्यूशन का हाउ स्क्यूड. अभी इसमें तुम क्या ही एवरेज निकालोगे? एवरेज तब निकालते हो व्हेन योर स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा इज वेरी लो. यहाँ पे देख, नाउ सी दिस, इफ आई जस्ट टेक Q4 और Q3, राइट, my Q3 would be roughly about 5%. Okay. And this was only 2 months. Let me take it as 17% for these 2 months. Okay. Now see this distribution curve. Does it make any sense? The only thing that came in one was here. Okay. बाकी सब तो इधर ही है. Right. Okay. But this is not something which is ideal. This was something which was ideal for me at that mental state. Okay. Now I may be a lot more calmer in handling all of these. But when, say, 4 5 years back, I wanted to get my mental confidence back, there are things which I used to do everything to earn money beyond a point. ठीक है, तो ये जो MAE का लॉजिक क्या था ना, when we did it with the group, was actually this. जब मैं ये कर रहा हूं ना, ये पार्ट पे मैंने क्या रियलाइज किया, why did I actually squat it off very fast? I realized कि भाई मेरे ये जो विनर्स है ना, और से ये जो 1.47 आया, ओके, आई डिड द सेम MAE एनालिसिस. आई टर्न कि भाई जो विनर है वो तो चल ही नहीं रहे मेरे, व्हाई शुड आई इवन गिव अ 1.5% रूम टू माय लूजर. Also, we were also all breakout traders at that time. We were not anticipation or pullback traders, so the squat percentages also many a times may be higher. So right now, let's say if you want to right now, if you want to get back your confidence, let's say you have a bunch of losing trades and you want to get your confidence back, would you do the same process again, or you tweak and you do something different? Yes, I do. You do the same process. Okay. Vivek, दो क्या होगा ना, देख, in this business, no, you are always going to feel like an idiot. You only need to manage yourself like feeling a lesser idiot at times. Okay, वो रहने ही वाला है, ठीक है. In that case, I do things to manage my mindset because I am also, अभी ये जैसे खत्म होगा ना, 11 o'clock I need to 11:30 I need to finish a listed company balance sheet. Finish it, I have that pressure. सुबह और एक board meeting होगा. Then there's a TradeTM, another lecture that we need to prepare for the weekend. In this case, imagine your life is going to catch on with your trading. Okay, now Dikshit is working, Priyanshu will start working, Avi has his business to get done. You will have 100 life pressures which are continuously going on. Trading cannot be a separate activity where we completely go into a mental silo and not let anything affect us. It is going to happen. Dikshit, if he had a bad day at office, it is somewhere or the other going to affect his trade. It is human. Sure, yeah. Okay. At times, expect an imperfection in your strategy. It is absolutely fine. It is fine if the stock has moved 100 hours. You have taken only 5 hours or 6 hours because that was your right. Okay. Okay, makes sense. Thanks. In fact, एक जो सबसे अच्छा लाइन आई रिमेम्बर मिनरविनी का था, वो आई थिंक सिस्को वाला स्टॉक था. ओके, ही हैड सेड कि भाई वो कुछ 1000% गया था, बट आई हैड एंटर्ड इट लाइक 20 times and I had taken like 10% 20% at each time. Okay, he said कि भाई स्टॉक बेचने के बाद या खरीदने के पहले उसका जो मूव होता है ना, that is not affecting my P&L anyway, so I'm not bothered by it. But that would take time to get into that mental, probably with the amount of reps. That comes, frankly, I'll tell you, that comes only with practical execution. So the two guys that I worked with, and I asked them to take so many trades. So the two guys, I think, have taken about 700, 800 trades in the last 4 months. Okay. I did not expect so much of a volume. Okay.
They took it by instinct. Okay, क्योंकि earning season भी था ये सब. But what it got out from them was absolutely complete execution fear. तुम एक ही चीज कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो ना. व्हाट वाज द लॉस? मैं बोला कि भाई तेरा लाइफ में क्या जाएगा, 20 लाख जाएगा ना, 10 लाख जाएगा. इफ इट इज नॉट एन अमाउंट विच विल गेट यू टू रोड्स और विल नॉट अफेक्ट यू वेरी मटेरियली और सेट यू बैक, टेक अ रिस्क. ठीक है, तुम इतना तो बेवकूफ ट्रेडर नहीं हो कि 10 लाख ही गवा दोगे. रिस्क मैनेजमेंट तो है ही, उतना ही स्टॉप लॉस ले रहे हो, उतना ही परसेंटेज रिस्क हो. बाय द टाइम यू हैव लॉस्ट एनीवे 1 लाख, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द मिस्टेक्स यू आर डूइंग. लूजिंग द नेक्स्ट 1 लाख इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर डिफिकल्ट. After that, losing the next 1 lakh is going to be a lot more difficult. So even if you lose 10 lakh, you need to be so bad that is way beyond your imagination or skill level. And most of our traders in this group are that way. So I don't need to handhold you guys like the other traders. नहीं भाई तू stop loss ही डाल, तू छोटे capital से try कर. We don't need to go that way. Got it. Yeah. The last time भी यही था ना. We had to get out of our fear. Yeah. So it's fine. You are going to lose. ठीक है, बट यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू लूज. आर यू लूजिंग आउट ऑन अ बिग विनर एंड गेनिंग सम कॉन्फिडेंस एंड अ क्विक चर्न? तो विमता में मेरा प्रॉब्लम क्या था विवेक, दैट आई डिड नॉट एंटर विमता अगेन. बट दैट ट्रेड इन इटसेल्फ व्हेन आई डू अ पोस्ट एनालिसिस इज अ गुड ट्रेड फॉर मी, इवन दो इट वाज हार्डली अ 2 hour ट्रेड. अगर मैंने बेच दिया होता ना, देन आई वुड हैव बीन द इडियट बिकॉज माय ऑब्जेक्टिव वाज नॉट इन सिंक.